सेमिनार को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब आदरणीय श्री वी रमेश बाबू गारो, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड पंजाब से अनुरोध करता हूं कि वह अपना उद्घाटन संबोधन प्रस्तुत करें। They are calling me Garu. It is a respectable award which we frequently use in Andhra Pradesh and Telangana part of the country. So today we are happy that respected Chief Guest of today's function, Sardar Harpal Singh Ji, Honorable Minister of Finance, Government of Punjab, Srimati Ritu Agarwal, Secretary, Corporation, Government of Punjab, Sri Pankaj Sethia, General Manager, Reserve Bank of India, Sri Gurikpal Singh, OSC, Haryana Regional Office, Sri G.K. Negi, Chairman, Punjab Gramin Bank, distinguished dignitaries from banks, line departments, universities, SLBC, RBI, FPOs, progressed farmers and members of the media, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to welcome you all and express gratitude for your presence at the State Credit Seminar 2026-27. It is an annual event every year. We prepare the PLPs as well as the State Credit Seminar, and it will be launched by a dignitary. And we are very happy that we have Sri Sardar Harpal Singh Ji among us to launch this state focus fair. So just before that, I just wanted to give some few indications that Punjab is a unique state. How Punjab has become unique state when there are so many states and there are so many other other regions in the country, because it is a very, very small state, as you know. Being a total geographical area of the country, it is only 1.5%, contributing 11% of paddy and 15% of the wheat production in the country. Then when we see the yields of these both major crops, both paddy as well as wheat, it is the highest yield in the country, much ahead of many states, much ahead of the national average. And also we are blessed with the irrigation, because nowhere in the country 98%, almost 100% of the cultivated area in this state is irrigated. And the cropping intensity, if you see the cropping intensity, that means same land is being used for multiple two crops or three crops in a year. It is 190%. माइक वहाँ रखना है. So this is why the state of Punjab is very unique to the nation. Then we have other issues which we can say because of these other parameters also, where the state stands first or second, making the state very, very distinctive, very, very important for the football of the country. The contributions was already told, and also the yield levels were we have already mentioned, and income levels, agricultural income levels of the households, and also per capita income is much ahead of any other state in the country. Then the contribution to GSDP of the state, Punjab agriculture contributes 25%, engaging only 27% of the population, whereas at national level, the agriculture contributes only 16%, engaging 46%. So this is the distinction between the national level and the state level of agriculture. And we have the best quality of basmati rice, which is exported. Most of the basmati rice is being grown in Punjab. It is earning a lot of foreign exchange in the form of exports to the nation. Then we have the mandis, because mandi board and mandi, we have the highest concentration of mandis. There is no dearth of marketing facilities in the state. And as far as the food processing industries are concerned,
almost 7% of the food or agriculture processing industries are in Punjab. So this makes the difference. This makes the difference, and this makes proud that we are working in Punjab, and we have to work towards the further development of the state. Then, besides agriculture, we have diversified towards horticulture also. We have taken up the quinoa. Quinoa is an exotic fruit, you know. It was imported from Florida long back in 1950s itself. 30% of quinoa production is in Punjab only. That is a distinction for the entire country. Then besides that, we have dragon fruit, then strawberries, and also farmers are harvesting riches by cultivation of Kashmiri lasoon also. These are the innovations of the agriculture. So we should compliment, we should have a respect and gratefulness to the farmers of Punjab. Besides the agriculture sector, we have dairy sector, which is very much developed, because we have the best breeds of both cows and buffaloes. So in the country, from here, so many places, they take the animals from here, seeing the production of the milk from the dairy cows. Dairy sector also, infrastructure sector also, besides the existing sector, we have modernized the dairy infrastructure sector. And because of many developments, maybe saline soils or alkaline soils, because when the lands are not suitable for cultivation, farmers are not leaving them, they are taking up the fisheries activities, because fish can tolerate pH up to 8 or more than that one. So that the farmers are diversifying their lands for fisheries, and that is a new activity. Then infrastructure-wise, we have developed a lot of infrastructure under our infrastructure assistance funds, the irrigation infrastructure, the road network, and also the warehousing infrastructure, because there is no spoilage or no damage to our grain produced in the state. Then in other parameters also, we have a very high literacy rate of 75%, including 70% for the women literacy. And as far as the ease of doing business, Punjab comes forward, but there is no depth of any hassle or any hassles in doing the business with any other agencies. Then as far as MSME sector is concerned, we have 14.41 lakh units of MSME, because after agriculture, this is the sector which is which absorbs many people, many of the unemployed youth, and creates livelihood for them. So this is another sector which is contributing to the development of the state. Then as a whole, the state contributes about 2.3% to the India's GDP. That is a very great achievement, and that is we are very happy that the contributions from the state. Then what are the NABARD initiatives? So NABARD, as well as because NABARD is not a bank, it is a developmental financial institutions. Because besides we have credit functions, we have non-credit functions also. We take up developmental and promotional activities through various funds. So a lot of funds have been created. So many funds have been created with the assistance from our profits only, with only our contribution, like Cooperative Development Fund, Watershed Development Fund, Food Processing Fund, Financial Inclusion Fund, Warehouse Infrastructure Fund, Gramin Vikas Nidhi, our NABARD Infrastructure Development Assistance, Farm Sector Promotion Fund, and Rural Infrastructure Promotion Fund. These are some of the funds entirely financed from our NABARD profits only. With these funds, we take up many developmental and promotional activities for the development of the state as well as the nation as a whole. Then besides that one, because we have to move towards the technology of upgradation, because if we are not upgrading our technology, we will become another Nokia phone. So we don't want the nation, or don't want the banks to become another Nokia phone. So we have taken up many initiatives towards the development of technology for the cooperative banks like Sahakar Sardi, EKCC, Bank.in, and also to protect them from the cyber attacks. Some cyber security aspects also we have taken up. Then upgradation of the PACs towards the computerization, because PACs are the backbone of the rural banking sector, to make them to come on par with the other financing agencies. There are more than 1,44,000 PACs in the country. In Punjab also about 3,900 there. PACs. We have taken up the computerization of the potential
packs in the state. More than 3,800 packs are being computerized so that they will come on par with any banking sector institutions and serve the nation and serve the state also. Then in Punjab, when we have our people, because where nobody enters, NABARD enters. NABARD has been working in each and every corner of the country. We are implementing the tribal development programs, other developmental initiatives, and capacity building programs, and also livelihood programs to bring them to the forefront and also make them their lives very easy. So NABARD has taken that type of initiatives. In 23 districts of NABARD, we have presence of 23 districts of Punjab, we have the presence of NABARD. All NABARD DDMs are there. So they move to each nook and corner of the state. They interact with the people with the help of the lead district manager, with the help of the lead development officers from RBA, the progressive farmers, the SSD women. They give the feedback. And they have, with their strenuous and year-long efforts, they have prepared the potential linked credit plans of the East district, and these PLPs have been launched already in each district. And the potential and whatever the assessment they have made in the potential linked credit plan, we have come up with another document called, that is a compilation of all the potentials. It is a state focus paper which we are going to launch at the hands of Honorable Minister today. So what NABARD can do? What NABARD can do for the state as well as so simple terms. I will only give 2 or 3 words. NABARD can see, NABARD can walk, NABARD can talk. This is what NABARD is doing. NABARD has been doing, NABARD will do, and the NABARD was there, NABARD is there, NABARD will be there. So this is what I wanted to tell you. And before closing, I request the August gathering, when you are planning for a state like Punjab, this is a very, very, very advanced state. You cannot compare Punjab with any other underdeveloped or any other part of the country. Our plans, our any implementation of the schemes should meet to the requirement of the plans, requirement of the farmers of the Punjab, with a lot of developments, a lot of initiatives, because they are very innovative in taking up the activities, starting from the paddy cultivation. Because earlier, before the onset, before the advent of our the green revolution, there was no paddy. It was millet, oilseeds, cotton in Punjab. They have taken up. This was the need of the hour. Punjab has fed the nation, because the nation was suffering due to lack of food grains. Punjab has come forward. The Punjab farmers have come forward to feed the nation, and that was the initiative. Because of these initiatives, there are some problems like development of salinity, development of alkalinity, and also the groundwater depletion. These are the issues which we have to address. These are the issues. I request all the August gathering to come forward and assist the farmers so that nobody will be deprived of any facilities available in the banking sector, and nobody will be forced to go up to the informal sector of financial assistance like any money lenders and all those. Banking sector is should be the forefront to assist the farmers. So with this, I once again welcome our chief guest. Thank you very much. धन्यवाद सर। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में नाबार्ड पंजाब में ग्रामीण विकास के अपने मिशन की दिशा में पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ निरंतर कार्य करता रहेगा। नाबार्ड ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य करता है। इसी प्रयास के तहत स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है आज, और इस अवसर पर हम स्टेट फोकस पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पंजाब की ऋण आवश्यकताएं और संभावनाओं को रेखांकित किया गया है, ताकि ऋण का प्रवाह और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। अब मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय जी
तथा मंचासीन अन्य गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करती हूँ कि वे स्टेट फोकस पेपर 2026-27 का विमोचन करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। अब मैं एक बार फिर से माननीय वित्त मंत्री महोदय और मंचासीन गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करती हूँ कि वे RIDF कॉफी टेबल बुकलेट का भी विमोचन करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। ग्रामीण भारत, नाबार्ड और पंजाब के वास्तविक परिवर्तनकारी स्तंभ यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर्स हमारे FPOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और किसान भाई ही हैं। नाबार्ड और सरकार के सहयोग से किए गए इनके प्रयास को आज हम सम्मानित कर रहे हैं। इस संबंध में मैं अपने मुख्य अतिथि जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह कृपया आगे आएं, जिससे हम FPOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और आर्टिसंस को एक एक कर सम्मानित कर सकें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दशमेश आजीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप फतेहगढ़ साहिब से मिस कुलदीप कौर एंड मिस कुलजीत कौर जी को जूट उत्पादों के उत्पादन के लिए। यह सेल्फ हेल्प ग्रुप फतेहगढ़ साहिब के उन 28 सेल्फ हेल्प ग्रुप और JLGs में से एक है जिन्हें नाबार्ड के माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत स्किल ट्रेनिंग प्रदान की गई है। 1.5 लाख रुपए की अनुदान सहायता से यह सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्तमान में पर्यावरण अनुकूल एवं सतत जूट उत्पादों का निर्माण कर रहा है। आज इस अवसर पर इनका एक स्टॉल भी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ उपस्थित अतिथि इनके उत्पादों का अवलोकन कर सकते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा संगरूर फुलकारी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड संगरूर से मिस सुखविंदर कौर एंड मिस मोनिका देवी जी को पारंपरिक फुलकारी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि फुलकारी पंजाब की एक GI पंजीकृत हस्तकला है। इस पारंपरिक कला का संरक्षण संगरूर फुलकारी प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसे नाबार्ड का सहयोग प्राप्त है और इनका अपना ब्रांड कसीदा आर्ट्स के माध्यम से इनके सदस्य आर्थिक पैमाने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एल्कलाइन सॉइल की समस्या के लिए नाबार्ड और ICAR CSSRI करनाल के साथ मिलकर एल्कलाइन सॉइल सुधार हेतु पायलट प्रोजेक्ट किए गए थे। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा संगरूर एग्री ग्रोअर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के CEO श्री बलविंदर सिंह जी को एल्कलाइन मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु। आज इनका FPO गेहूं, धान, सरसों, हरी मूंग सहित विविध फसल आधारित गतिविधियों में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। एल्कलाइन सॉइल की गुणवत्ता में सुधार के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगा वुडमोर फूड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पटियाला से श्री सुखदेव सिंह जी को।
इस एफपीओ ने प्रारंभिक चरण में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए साइलेज उत्पादन की शुरुआत की है। इनके एफपीओ द्वारा उर्वरक, बीज तथा कीटनाशक लाइसेंस प्राप्त किए गए हैं, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। और हमारा अगला एफपीओ है रुड़का हनी एंड वेजिटेबल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जालंधर। उनके सीईओ श्री विक्रांत सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं। इनके एफपीओ में कुल 420 किसान हैं और इनका एफपीओ शहद, सब्जियां, बासमती चावल, उड़द दाल, काला चावल, हल्दी पाउडर, गुड़ उत्पादों सहित विविध कृषि गतिविधियों में लगा हुआ है। और आज इनका भी एक स्टॉल यहाँ लगा हुआ है। आप सबसे अनुरोध है, तालियां बजती रहनी चाहिए। ये इनके लिए प्रेरणा का स्रोत है, प्लीज सब तालियां बजाएं। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शलोपुर किसान उत्पादक संगठन से गुरदयाल सिंह जी को, गुरदासपुर। ये एफपीओ 5 फरवरी 2015 को स्थापित किया गया था एंड ये हल्दी प्रसंस्करण, शहद, दालें, अचार और अन्य कृषि आधारित मूल्यवर्धित उत्पादों के विपणन में सक्रिय रूप से संलग्न है और इसने 55 लाख का कारोबार किया था 2024-25 में। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी शंगराय एफपीओ फिरोजपुर से श्री बलदेव सिंह जी को। ये 16 अगस्त 2023 को 412 फार्मर्स की मेंबरशिप के साथ स्थापित किया गया था। एफपीओ विभिन्न कृषि व्यवसाय गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न है, जिसमें मिर्च, तिलहन, सब्जियां और हल्दी पाउडर शामिल हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी विलेज वाटरशेड कमेटी बड़ी रोपड़ से कैप्टन मुल्तान सिंह राणा एंड कैप्टन चेयरमैन परमजीत सिंह जी को। एक समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानते हुए नाबार्ड ने इस क्षेत्र में बड़ी वाटरशेड परियोजना का समर्थन किया, जो 85 परिवारों में पहले 1000 हेक्टेयर को कवर करती है। बड़ी क्षेत्र का भूभाग बेहतर नमी परिस्थितियां, कम अपरदन और बढ़ी हुई जल धारण क्षमता को दर्शाता है। धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी फरीदकोट के किसानों को, जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती के जरिए फसल विविधीकरण में अपना योगदान दिया। अमरजीत सिंह ढिल्लों एंड राजिंदर सिंह। फरीदकोट जिले में नाबार्ड ने 20 किसानों के बीच 400 इकाइयों के माध्यम से ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने वाले एक रणनीतिक विविधीकरण पहलन का समर्थन किया। उच्च मूल्य और जल कुशल फसलों की ओर ये बदलाव जलवायु अनुकूल कृषि और आय विविधीकरण का समर्थन करता है। खत्म हो गया सर। आज आपसे सम्मानित होकर न केवल आज आए किसानों को प्रोत्साहन मिला है, बल्कि पंजाब के पूरे किसानों को प्रोत्साहन मिला होगा। आपका ये प्रेजेंटेशन के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप सब अपनी सीट पर बैठिए। धन्यवाद। अब इस महत्वपूर्ण दस्तावेज का संक्षिप्त परिचय देने हेतु मैं श्री रोहित कश्यप जी, सहायक महाप्रबंधक और जिला विकास प्रबंधक फिरोजपुर, और श्रीमती सिमरन सेठी जी, सहायक महाप्रबंधक और जिला विकास प्रबंधक रूपनगर और नवा शहर नाबार्ड से अनुरोध करती हूं कि वे स्टेट फोकस पेपर के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालें। उनकी प्रस्तुति से राज्य की ऋण क्षमता, प्राथमिकता वाले क्षेत्र तथा इस दस्तावेज में प्रस्तावित प्रमुख पहलों की जानकारी प्राप्त होगी।
Honorable Finance Minister Punjab, dignitaries on the dais and August gathering, सब ਨੂੰ मेरा सत श्री अकाल। मेरा नाम सिमरन सेठी है। मैं नाबार्ड पंजाब रीजनल ऑफिस ਵਿੱਚ EGM ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2026-27 ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। I will briefly present the credit potential assessed in the key priority sectors like agriculture, MSME, housing, export, education, etc. And also I'll highlight some NABARD's major interventions in the state of Punjab. NABARD ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵੋੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1982 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। NABARD basically works to support farming and rural development in a fair manner, and it is done by providing financial help, promoting new ideas and technology, and strengthening the local institutions so that the rural communities can grow and prosper. Talking about the flow of presentation of our state focus paper, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ it will be followed by the ground level credit flow in the state of Punjab, followed by the credit potential assessed in our state focus paper, and then we'll talk about interventions of NABARD in the state of Punjab, and we'll conclude with some of these suggestions and action points that we come forward. Punjab, sanu sab nu pata hai, it is a state situated in the northwestern region of India, with a total geographical area of around 50,000 square kilometers, which is 1.5% of India's total geographical area. Punjab word दो words नाल बनता है, पंज ते आब, मतलब पंज water rivers is the state of 5 rivers flowing through it. Agriculture is the mainstay of Punjab's economy. So Punjab, which all over India the जो production है wheat और paddy ਦੀ, that is 15% and 10% of all over India production respectively. Banks की गल करिए, banks play a very major role in the financial intermediation. A very strong banking network is very important for rural community to have access to credit, for the credit access to farmers, SAGs, the rural communities. Punjab ਵਿੱਚ 12 public sector banks हैं, 14 private banks हैं, one state credit, one state cooperative bank है, one RRB and 20 district central cooperative banks हैं. Functional around 3500 packs है, जिन्हां दी very strong outreach है Punjab with, specifically talking as compared to rest of India, because Punjab is packs are approximately 4 to 5 kilometer distance पे है in Punjab, whereas other parts of India it's at a distance of around 15 to 20 kilometers. The ground level credit for priority sector as of now are priority sector lending that has increased by around 26% from financial year 2021 to 24-25 from 1.59 lakh crore to around 2 lakh crore. The agriculture credit has shown a positive growth from 2021 to 22-23. However, the average growth is negative of 9% approximately over the 5 years time. MSME is the largest contribution in the PSL expansion, and other priority sectors have shrunk by around 68%. From this slide, we can clearly see that our term loan lending is declining, it's dipping. Whereas the term loan lending is very essential as it supports asset creation agriculture and ensures increase in the farmer's income. Coming to state credit plan for 26-27, the basic process of our preparation of state focus paper is PLP potential link plan is prepared at the district level by our DDMs of NABARD, the district development managers. It is done very realistically in consultation with the district banks, the district line departments and the NDM. And based on these PLPs, the state focus paper is prepared. It is basically a bottom-up approach. The state focus paper is prepared at state level by NABARD regional office, and it is in line
with the master directions of RBI and the priority sector lending. And based on our state focus paper, SLBC finalizes the ACP by setting their district-wise and sector-wise credit targets. So we hope that this document is useful and valuable source of knowledge for all our stakeholders, and it will surely somehow help us to achieve our targets for 26-27. Talking about sector-wise projections, the broad sector-wise projection for 26-27 is approximately 3 lakh crore. And sector-wise, talking about it, the agriculture is given 1.25 lakh crore of the total 3 lakh crore, which is 40% of the total assessment. MSME is 1.35 lakh crore, which is 43%, and other priority sectors are also given some projections. To highlight here, priority is given to the MSME sector. Government of India and the state government, दोनों की प्रायोरिटी हैगी इस टाइम MSME बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अंडर द सेक्टर. इनफैक्ट यूनियन बजट विच भी इस साल 6% ज्यादा एलोकेशन हैगी है फ्रॉम लास्ट ईयर इन द MSME सेक्टर. कमिंग टू NABARD initiatives in Punjab, we have our developmental initiatives. We provide refinance to cooperatives and RRBs, and also we do infrastructure financing. Developmental initiatives include many schemes like FPOs, OFPOs, MEDP, LEDP, rural marts. Pondering on a few, जिदा कि farm producer organization जो है, earlier FPO जो है farmers club create करता थी NABARD, small farmer groups to provide them training and access to the credit of the banking. Over the time, they are upgraded into the producer groups, and then they are registered as producer companies. NABARD has promoted a total 113 FPOs in 1,642 villages in Punjab, covering around 25,000 farmers. Hope these FPOs, they will not only boost the agriculture productivity but also fulfill the vision of doubling farmers' income. OFPO, आज असी मिले हैं साडे विच मौजूद हैं OFPO members, संगरूर फुलकारी producer company limited. It is benefiting around 370 women जो रूरल वुमेन हैगी हैं, कारीगर हैगी हैं. इन्हां दा मंथली अराउंड 5,000 to 8,000 इन्हां दी इनकम बन रही है, मंथली इनकम है. और इस कंपनी ने 23-24 विच अराउंड 11 लाख का टर्नओवर कीता सी. Geographical indicators जो होंदा है, it is basically the property right that identifies the goods originating from a specific geographical location. NABARD basically assists in the pre-registration, post-registration of GI registration. This time NABARD is under process of GI registration of 5 products of Punjab, जिधे विच ठठेरा अमृतसर क्राफ्ट हैगा, परांदा अमृतसरी किरपान, पटियाला जूती, 5 ए हैगे हैं परांदा. Financial initiatives are also there in Punjab, which includes setting up our RCTs, FI camps ਅਸੀਂ करवाते हैं through banks, RCTs, PACs, through various other nukkad नाटक etc. FI camps वगैरह करवाते हैं. इनफैक्ट जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैगे पंजाब दी, मोगा और फिरोजपुर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इसी साल 1600 camps ਅਸੀਂ करवाए हैं only during this financial year. Also, FI initiatives with cyclical banking technologies हैगी हैं like micro ATM, POS machines, green print facilities, काफी schemes हैं साड़ी. Then we have other schemes like MEDP, LEDP, skill development, जिधर विच असी skills नू और जो matured SCGs हैं उन्हां नू trainings provide करने वास्ते support करते हैं. It is also aims at the women empowerment, most importantly. इहदे नाल इन्हां दी income भी वधदी है. And in order to empower these rural artisans, market तक पहुंचाने वास्ते साडी schemes हैगी हैं like rural mart, mobile van, to make them reach to the market to sell their products. Also, in the marketing or visibility to promote currently, we send the participants, we encourage them to participate in various melas and exhibitions in various states all over India. Talking about watershed development project, Badi Ropad vich jo sada hega, it is the first and the only watershed project in Punjab state, and very proud to be the DDM of that district as well. It has been in that area because it's a hilly area, there was soil erosion and natural resources जो है उससे pressure सिगा. So this project was implemented by NABARD in around 1,000 hectares covering around 85 families
providing a grant support of around 2 crores. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ treatments ਕੀਤੀਆਂ like gully plug, waste wear, farm ponds, etc. And a very positive impact has been seen, like slowing of the down runoff of soil, enhancing the groundwater recharge, etc., stabilizing the landscape, and very, very importantly, it has encouraged the community ownership of the natural resources, and we have our members today with us. Coming next, एक होर प्रोजेक्ट गुरदासपुर जिले विच हैगा 8 पिंडां विच प्रोजेक्ट नाबार्ड ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ग्राउंड वाटर जो पंजाब विच है वो बहुत लो जा रहा है क्योंकि इसकी एक्सट्रैक्शन बहुत है, मोर देन 141%। डिस्पाइट ऑफ द गुड सॉइल्स एंड कैनाल इरिगेशन, ट्यूबवेल्स से बहुत डिपेंडेंस हैगी है। सो टू कोप अप विद इट एक पार्टिसिपेटरी प्रोजेक्ट हैगा गुरदासपुर विच। एक होर प्रोजेक्ट है एल्कलीन सॉइल। साडे पंजाब दी अराउंड 1.5 लाख हेक्टेयर जो है सफर्स फ्रॉम एल्कलिनिटी, सॉइल एल्कलिनिटी, एंड इट रिस्ट्रिक्ट्स द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी आल्सो। सो इन कोलैबोरेशन विद आईसीआर करनाल असी पटियाला और संगरूर दे 11 पिंडां विच एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है यूजिंग सॉइल टेस्टिंग एंड जिप्सम एप्लीकेशंस। wheat और पैडी yield ਉਹਦੇ ਨਾਲ increase ਹੋਇਆ है, and also farmers ਦੀ income around 26,000 रुपए पर एकड़ जो है वो देखी गई है कि वो increase हुई है। then crop diversification ਨੂੰ ਵੀ promote ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ और value addition ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, क्योंकि monocrop area बहुत है पंजाब ਵਿੱਚ। another project is there in Moga district, around 150 farmers ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ project implement ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ improved cultivation practices adopt ਹੋ ਰਹੀਆਂ हैं, and there's a value addition like onion garlic flakes बन रहे हैं, fermented honey garlic बन रहे हैं। There's another project, dragon cultivation project फरीदकोट which around 20 पिंडा विच project हो रहा है, and the early growth and the harvest shows that this particular crop it supports the climate resilient farming and the income diversification. Apart from this, there are many other projects which are implemented in various districts of Punjab. I'll hand over to my colleague Rohit Kashyap to further take you through the presentation. Thank you. Thank you, Simran ma'am. साडे बड़े सत्कारयोग वित्त मंत्री जी सरदार हरपाल सिंह चीमा जी, respected dignitaries on the dais and members present in this August gathering. Sat Sri Akal and Ji Ayan to everyone. I am Rohit Kashyap, and indeed it is a privilege to talk today on this remarkable journey ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ for infrastructure development and credit deepening in the state. ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਰੋਲ ਨਾਬਾਰਡ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। As we all know, Punjab is shifting from this traditional rural practices to a more robust and technologically driven rural economy, जिसके लिए various efforts NABARD करता है। कुछ मेरी colleague ने already mention कर दिए हैं, and I will be talking more on empowering the rural financial institutions through refinance or supporting the rural infrastructure through various funds of NABARD। ਜਿਹੜੀ partnership ਸਰਕਾਰ ਤੇ NABARD ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ pillar ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ digital transformation ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ NABARD ਨੇ ਬਥੇਰੇ interventions ਕੀਤੇ हैं। ਤੇ ਨੋਟਵਰਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਸਹਿਕਾਰ ਸਾਥੀ, ਅ ਗੇਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ 2025 ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ RFIC ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ bank.in ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਹ ਉਹ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ एक अनोखी इन्वेंशन है जो NABARD लेके आया सी अगस्त 1998 ते from that year till now we have evolved this product and now moved towards an eKCC portal. This is an end-to-end digitized loan origination software which will not only reduce the turnaround time but also help in providing digitally verifiable data to our FIs. Cooperatives, हर रूरल इकोनॉमी की जी बैकबोन है वो रूरल कोऑपरेटिव्स होंगी है। तो बड़ी खुशी होती है शेयर करते हुए कि 19,243 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नाल पंजाब इज सैचुरेटेड। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3482 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ। ਫॉर द ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ द हाउस
ਇਹ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 60% ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 73% ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੈਕਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Any scale of any partnership can only be measured in numbers, and today I will talk about two of them. The first being infrastructure, and I'm very happy to share to the House, Punjab ऐसा सूबा है पूरे भारत वर्ष में जेदा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्सेस से टॉप नंबर पे आता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਰੋਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ RIDF ਰੂਰਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ 30 ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਡਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਰਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 1600 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਗੈਰੇਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸੱਚ ਐਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, because this will provide cheaper and greater accessibility of credit to the farmers. On that front also, at the short term front, we all understand short term amounts to the production credit. There in the last year itself, 6,294 crores was extended to the RFIs. I am very happy to share here that due to liquidity constraints, another window of DRA was opened for the state, and for the first time, DRA of 500 crores was extended to the Punjab State Cooperative Bank. As my colleague has already pointed out, that capital asset creation is the way to go in agriculture, and that will help in the development of income for the farmers. On that front also, NABARD over the past decade has provided 23,766 crores towards RFIs. For the information of the House, this has resulted in Punjab being one of the heavily mechanized states as compared to the country. Sadka, rural connectivity. ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਆਲ ਵੈਦਰ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਰੋਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਰੋਲ ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ RIDF ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਡਾ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ 4600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 23,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੋਡ ਲੈਂਥ ਤੇ 9,000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵੇਬਲ ਸਰਵੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ 'ਚ ਸਕੂਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ ਪਲੇ ਹੋਇਆ। 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 11,000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ 4,300 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੂਡ ਬੋਲ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੈਟ ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਆ ਨੂੰ 100% ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 4,800 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਅਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ 1300 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੋਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਕ ਇੱਕ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਂਸ the birth was given to Dairy Infrastructure Development Fund, and close to 250 crore has been extended to the Punjab government. This has resulted in creation of milk processing facilities in the 4 ਦੁਆਬਾ milk unions. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਤੇ 530 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 18 ਲੱਖ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ always feels that to maintain its stature of Punjab as the granary wall of the India, investment in post-harvest infrastructure is very important, such as warehouses.
and hence the birth of Warehouse Infrastructure Fund took place. 276 crore was extended under WIF and 27 crore was extended under food processing. With 14,000 megawatts of power transmission facilities already available, NABARD has supported by extending 1,000 crores to the government and establishing 124 substations. Now Punjab has done a lot. From here, where do we go now? So we have classified it in our paper in three major heads. The first being Agri MSME mix. Punjab has been consistently ranked topmost in ease of doing business index in the country. And that has been due to the schemes like Invest Punjab introduced by the Punjab. Financing of the high agri-value horticulture crops and promotion of the processing infrastructure is very important. Already ਅਸੀਂ ਇੱਕ मेगा फूड पार्क ਨੂੰ support ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ processing ਨੂੰ ਹੋਰ support ਕਰੀਏ. Water resource management, as my colleague has already said, with the groundwater depleting, we need to support micro irrigation systems. Since we are an agrarian economy, we are not promoted or we are suffering from the vagaries of nature and hence we need to support it. The way forward towards the sustainable agriculture rests on 7 pillars. It starts on the input side from quality seed material right up to the agro-processing and collectivization. To conclude, it is a privilege that Punjab government and NABARD has achieved so much, and I believe that NABARD as a strong supporter and partner, sir, ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ. Punjab has shown way and it will show the way to the country for development. Thank you everyone for your time. Sir and Simran ma'am, इस दस्तावेज की तैयारी में योगदान देने वाले सभी हितधारकों के प्रयासों और सहयोग के लिए हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं. हम इसके सफल क्रियान्वयन में भी इसी प्रकार की प्रतिबद्धता की अपेक्षा करते हैं. कार्यक्रम की आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हुए और इस चर्चा को और समृद्ध करने के लिए अब मैं भारतीय रिजर्व बैंक चंडीगढ़ कार्यालय के महाप्रबंधक श्री पंकज सिंधिया जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपने विचार हमारे साथ साझा करें. Thank you. Sat Sri Akal, Namaskar, and not good morning but good afternoon everybody. Honorable Finance Minister of Punjab, Sardar Harpal Singh Cheema ji, Secretary Cooperation Government of Punjab, Madam Ritu Agarwal ji, Punjab Grameen Bank Chairman Shri Negi ji, Shri Guru Iqbal ji representing NABARD Haryana, Chief General Manager NABARD Punjab Regional Office and the host of today's function, Shri B. Ramesh Babu ji, distinguished senior bankers, representatives from the government, the farmers, FPOs, SHGs, representatives from the media, my dear colleagues from the financial fraternity, ladies and gentlemen. At the outset, let me extend a heartfelt thanks to NABARD for inviting us and also extend welcome to all the dignitaries on the dais and the participants who've gathered here today. It is a privilege to be here today at the State Credit Seminar. So this forum is not merely an annual ritual. लगता है कि हर साल NABARD credit paper release करता है, but it serves as a lighthouse. It serves as a financial compass for the state. The credit roadmap of the state is determined by the state credit paper. So as we stand at the threshold of this next fiscal year, the release of state focus paper by NABARD marks a critical milestone in our collective journey towards sustainable and inclusive growth in the state. The theme of the paper, they say today, this year is digital credit ecosystem driving transparency and efficiency. The presence of Honorable Finance Minister today shows the importance that the government attaches to this particular event and the delivery of credit in the state. First, let me congratulate and commend NABARD Punjab RO for the meticulous effort put into this paper. For the bankers present here, this paper defines your targets with a purpose.
जो हम लोन देते हैं उनके साथ जो सामाजिक सेवा की भावना जुड़ी हुई है, that is clearly outlined in this state focus paper. It highlights where the capital is needed most, whether in crop diversification, food processing or MSME. India is a capital, not a very capital rich country, so capital has to be judiciously allocated. और वो judicious decisions कैसे होंगे, that is where this paper can help us. अगर एक और तरीके से देखें तो this state क्रेडिट पेपर जो स्टेट फोकस पेपर है, सिर्फ एक क्रेडिट प्लानिंग का डॉक्यूमेंट नहीं है. कभी कभी हम ये गलती करते हैं, इसको सिर्फ क्रेडिट प्लानिंग का डॉक्यूमेंट मान लेते हैं. It is evolved into a very comprehensive document about the state and the economy. Think of any banker coming from, let us say, southern India to Punjab. Think of any bureaucrat, any government functionary, any policy maker, any researcher or academician, even a lay person who wants to know about Punjab. So this is the paper where he'll get the most authentic information related to the state economy. ये इस पे चर्चा हो चुकी है कि it's basically a consolidation of the potential aid plans, so I'll not talk about it. NABARD कई सालों से ये पेपर रिलीज कर रहा है and we all have benefited from it. Now Punjab, coming to Punjab, Punjab has been long recognized as the food bowl of India. As was mentioned in the presentation, it is one of the leading producers of wheat in the country and has been at the forefront of the securing national food security for our nation. As stakeholders in the system, we must remember that timely and adequate credit is the backbone of this economic strength and economic momentum. The bankers of the Punjab, all of whom are present here today, they carry a significant responsibility to ensure that the credit needs of farmers, entrepreneurs and households are met without delay and without compromise. In recent years, Punjab has demonstrated exceptional performance in initiatives such as Agriculture Infrastructure Fund. परसों हम अटेंड कर रहे थे स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी मीटिंग पंजाब की, जहां पर ये डेटा उभर के आया कि हिंदुस्तान में टॉप 2-3 परफॉर्मर्स में पंजाब की जगह है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लैंडिंग की. मैडम अपनी प्रेजेंटेशन में बता रही थी कि टर्म क्रेडिट कम हुआ है. अगर इसी तरह से हम AIF को ध्यान देते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम टर्म क्रेडिट में भी टोटल टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे. आफ्टर ऑल बैंकर्स हैव टू रियलाइज कि KCC से पैसा नहीं बनता. अगर बैंकर्स को देश का उत्थान करना और पैसा बनाना है तो इट लाइज इन द टर्म क्रेडिट. What do we need to do? We need our staff and our branch managers at the grassroots to not just sell a loan, but also keep in mind the financial literacy. Educate the farmer on Kisan credit cards benefits of taking term loan, importance of insurance, whether state schemes or Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, social security schemes, KYC, account hygiene. More importantly, the importance of timely repayment. नहीं तो सिविल खराब हो जाएगा. और आजकल डिजिटल युग में ब्रांच मैनेजर्स को बिकॉज दे कम इन संपर्क विद द कस्टमर्स, उनके साथ नजदीक आते हैं, तो साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ अवेयर करना भी हमारी जिम्मेवारी है. गवर्नमेंट का रोल इज इक्वली क्रूशियल. व्हाइल बैंक्स विल इंश्योर द सप्लाई ऑफ क्रेडिट, द गवर्नमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग डिमांड फॉर द क्रेडिट. So when demand creation and credit supply move together, the impact on economic growth is far significant. भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से हमारा रोल और गोल एकदम क्लियर है. Credit must flow to all the productive sectors of the economy without compromising the financial stability. We believe in inclusive growth. पंजाब में हमने देखा है बहुत ही मजबूत और रेजिलिएंट बैंकिंग सेक्टर है. फ्लड से भी उभर कर आए हैं, लेकिन लैंडस्केप अब बदल रहा है. अब जैसा इस पेपर का थीम भी है, नाउ इट इज अ डिजिटल फर्स्ट फाइनेंशियल एनवायरनमेंट. So RBI is committed to deepening digital payments, ensuring that every single village in Punjab has access to secure digital footprints, which in turn makes credit appraisal easier for the banks and access to credit easier for the customers. Supporting the priority sector, we urge the banks to look beyond the traditional safe bets and actively fund innovative agri startups and climate resilient farming, keeping also in mind the falling groundwater level in Punjab. We've also recently, 3 days ago, we have, on the request of SLDC, approved the period up to 31st March for providing relief
and restructuring to borrowers in the state of Punjab, those who have been affected by the natural calamity of flood in the past few months. Sir, I would like to assure you our full support in achieving these endeavors. We remain committed to facilitating a stable, enabling and responsive financial system that supports growth while promoting and safeguarding the financial stability. Together, all of us are partners not only in the growth of Punjab but also in the growth of the nation. To my fellow bankers, let us treat the projections of the state focus paper as a floor and not as a ceiling. To the state government representatives, the RBI and NABARD remain your partners in enhancing the ease of doing business and improving the recovery climate, which is essential for recycling of credit. In conclusion, the state focus paper is a blueprint for prosperity. Let us ensure that the credit we deploy today becomes the street for a stronger Punjab today. I congratulate NABARD once again for this excellent roadmap. I am confident that with the Honorable Finance Minister's vision and the strength of our banking in Punjab, Punjab will continue to lead the way in India's growth story, and the state focus paper will contribute to the Chardi Kala of Punjab. Thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद सर। हम आपके अमूल्य विचारों और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਤੰਭ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੇਤਰਤਵ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਦਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। मंच पे सुशोभित नाबार्ड के सीजीएम बी रमेश्वर बाबू जी और पंजाब सरकार के कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रितु अग्रवाल जी, पंकज सेतिया जो आरबीआई से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उनके जनरल मैनेजर साहबान, गुरकवाल जी जीएम हरियाणा से नाबार्ड के, और जी के नेगी जी जो पंजाब ग्रामीण बैंक के जनरल मैनेजर हैं, और आप मेरे सामने सुशोभित बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर्स और डिफरेंट बैंक से आए हुए सभी साथियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं देख रहा सीगा कि नाबार्ड ने स्टेट क्रेडिट सैमीनार जिहड़ा 2026-27 करवाया गया, जिहदे अंदर फोकस पेपर इन्होंने स्टेट फोकस पेपर भी रिलीज किया गया पंजाब का, जिहदे प्रायोरिटीज दिखाई ने कि पंजाब दी किहड़ी प्रायोरिटीज नेगियां और पंजाब को किस तरह नाबार्ड जिहड़ा सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि जो भी नंबर ऑफ टाइम्स मीटिंग्स होंदियां रहियां, नाबार्ड ने कदे भी चाहे एग्रीकल्चर खेत्र की गल करिए, चाहे एजुकेशन खेत्र की गल करिए, चाहे सोशल सैक्टर की गल करिए, इन एवरी फील्ड ये हमेशा ही सपोर्टिव रहे ने, हमेशा ही इन्होंने पंजाब के नाल मोढे दा मोढा ला के खड़े ने। और मैं पिछे याद आ वीर रमेश्वर बाबू जी नवे सीजीएम आए ने, पुराने सीजीएम साहब को मैं भेजा सीगा क्योंकि मेरे अपने हल्के के कुछ लोग ड्रैगन फ्रूट जिहड़ा कि बहुत पंजाब शायद पहली बार सुनिया होगा, बहुत सारे लोगों ने ड्रैगन फ्रूट की जिहड़ी खेती है पंजाब होती है, और मेरे हल्के के अंदर बहुत ही शानदार ड्रैगन फ्रूट के किसान से जे उन्होंने सीजीएम साहब विजिट करके आए थे। अज भी ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले फार्मर जोड़े ने वो इतने असी उन्होंने सम्मानित किया गया। जो पंजाब कहने का भाव आ कि डाइवर्सिफिकेशन वाल, पंजाब डाइवर्सिफिकेशन वाल साडी आम आदमी पार्टी की सरकार अपने कदम जिहड़ा वो अगे लेके जा रहा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन तो बिना हुण अगे बढ़ना बहुत मुश्किल होएगा। क्योंकि पंजाब का लगभग जे मैं गल करा 151 जिहड़े साडे ब्लॉक्स ने उन्हां चों
170 का जोड़ा वाटर लैवल आ यानी ग्राउंड वाटर लैवल आ वो बहुत नीचे जा चुके हैं और सानू डाइवर्सिफिकेशन पर बदलना पड़ेगा क्योंकि पंजाब ने नेशनल फुटबॉल के अंदर आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जी वो पंजाब की डे वन तो रही है मैं देखा गया 1981 दे विच जदों किते ना किते उड़ीसा या डिफरेंट स्टेट के अंदर काल पिया सी यानी भयानक महामारी फैली सी उस समय पंजाब ने ग्रीन रेवोल्यूशन सिखरा ते सी और उस समय देश के फूड बैंक बहुत बड़ा हिस्सा पाना की शुरुआत पंजाब के किसानों ने की। अज पूरा देश जिहड़ा पूरे देश का हर एक नागरिक पेट भर के खाना खाता गा वो बहुत बड़ा हिस्सा चाहे वीट सैक्टर का गा चाहे राइस सैक्टर का गा वो पंजाब का गा क्योंकि पंजाबियों ने सख्त मेहनत की और वो कदे भी मैं देख रहा सी कि नाबार्ड ने पिछे मुड़ के नहीं देखा हमेशा ही चाहे सानू लोन के रूप में पैसे जो लगातार मिलते रहे ने सो ये इको फ्रेंडली माहौल जो एटमोसफीयर है वो भी बना के रखा गया। कल ही मैं एक मीटिंग लैके आया गा पंजाब के खास करके जोड़े पंजाब के छोटे व्यापारी ने जोड़े MSME चाहते ने या बड़े व्यापारी ने उन्होंने सारे का ट्रेड कमीशन का गठन पंजाब किया। कल मेरी मीटिंग से उन्होंने ट्रेड कमीशन के चेयरमैन साहबान और पंजाब के DGP सारे SSP साहबान ताकि इको फ्रेंडली जोड़ा माहौल आ बनया रहे क्योंकि कई बार जड़िया फेक थ्रेट कॉल्स ने या जड़िया बोगस या कॉल्स करते रहते हैं या डर का माहौल पैदा करने की कोशिश करते तो दूर किया जाए। वो कल एक मैंने मीटिंग जी DGP लैवल के सारे SSP साहबान को शामिल किया ताकि पंजाब जोड़ा वो लगातार तरक्की करता रहे। जो सुपना सरदार भगवंत सिंह मान जी ने सिरजा कि पंजाब रंगला पंजाब बनना चाहिए वो पंजाब लगातार अगे बढ़ रहेगा। जे नाबार्ड की गल करिए पंजाब के ग्राउंड वाटर को सेव करने के लिए कि पंजाब का ग्राउंड वाटर सेव किमें हो साडी जी स्कीम आ गई कि हर घर हर खेत तक पानी लेके जाना गा। सरदार भगवंत सिंह मान जी का सुपना गा कि हर खेत तक पानी लेके जाना गा। हालांकि साडा जिहड़ा कैनाल सिस्टम है बहुत मजबूत है पर लेकिन हुण असीं अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स के राही हरेक खेत तक पानी लेके जा रहे हैं। उहदे नाल साडा ग्राउंड वाटर जिहड़ा उहदा लैवल काफी उपर आया गा। पिछे रिपोर्ट छपी सी कि 2 फुट जिहड़ा उपर पानी आ गया तो मतलब की है कि जिहड़ा साडा कैनाल वाटर आ जो 100% यूटिलाइजेशन होगी खेत के अंदर तो ग्राउंड वाटर का पद्धर भी वधूगा और जिहदे नाल जिथे किसान के हालात सुधरनगे उत्थे मैं समझदा एनवायरमेंटली क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज्यादा बड़ी पद्धर ते आ रही है। सो क्लाइमेट चेंज के अंदर असी अपने आप का एक उन्होंने रोकण दे विच बहुत बड़ा हिस्सा जो पंजाब सरकार पाऊगी पंजाब स्टेट पाऊगा पंजाब का फार्मर पाऊगा क्योंकि जो ग्राउंड वाटर उपर आऊगा तो कितने कितने मैं समझदा जी साडी धरती आ वो होर जरखेज हो क्योंकि पंजाब की धरती हमेशा जरखेज धरती आ। इतने हमेशा ही पंजाब की धरती ने बड़े बड़े जिथे सूरवीर योधे पैदा किए ने संत महापुरुष पैदा किए ने उत्थे ही मैं समझदा हरेक खेतर के अंदर देश के विच अहम भूमिका निभाई है। कोई भी खेतर चुन लीए किसी भी प्रकार का खेतर चुन लीए पंजाब ने अहम भूमिका निभाई है। सो मैं नाबार्ड के साडे CGM साहब का बहुत बहुत थैंक यू अदा करना चाहना धन्यवाद करना चाहना क्योंकि इन्होंने मैंने इस फंक्शन से बुला के मान सम्मान बख्शा और ये जो पेपर आगा जिस तरह RBI के मैनेजर साहब ने कहा जनरल मैनेजर साहब ने एक सिर्फ पेपर नहीं है अंदर बहुत ही खूबसूरत जानकारी जी बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है।